नमस्कार वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो आज आम डिस्कस करने जाऊे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट 3 रो क्वेश्चन नंबर 31 रू। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज एन एरिड रेन shadow desert and the driest desert in the North America. It extends from the Sierra Nevada range of the Colorado Plateau and merges with the Great Basin to the north and the Sonoran Desert in the south. The above passage described which of the following desert? Where correct answer is Mojave Desert. Option B is the right answer here. So next question number 32. Which of the following continents the equator doesn't pass through? Equator South America देखी जाए, then it passes through also Africa. It passes also through Asia. Europe देखी जाए नहीं, so it not pass देची Europe. So option D is the correct answer here. And equator also passes through Australia. So next question number 33 go. This is a vertical cloud with a rounded top and a horizontal base, a typical of humid tropical region associated with uprising conventional currents. Its great white globular mass may look grey against sun, but it is a fair weather cloud. तो यार करेक्ट आंसर या क्या कहमें cumulus is the right answer. Option B is the right answer here. से बड़ा साइरस एटा गोटे फाइब्रस लाइक लुकिंग था. इट्स appears like wisp in the blue sky and that also Murray's and Murray's tail कहा जाए. It indicates the fair weather and often gives a brilliant sunset. Then we have nimbostratus. Nimbostratus mostly continuous rain and snow and sleet responsible. It's dark in color, dull cloud and clearly layered. ताकू आम कहे कि रेन क्लाउड ऑल्सो कह जाए निम्बोस्ट्राटस को. एंड निम्बस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थंडर स्टॉर्म, तो ताकू थंडर क्लाउड बोली कह जाए. तो ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज. द इनर हिमालयस आर नोन एज द हिमाद्री एंड ग्रेट हिमालय. हिमालय मोस्टली 3टा पैरेलल रेंज डिवाइड होती. तो इनर हिमालय जो आम कहे ग्रेट हिमालय कहे. दिस इज राइट. द कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, is a part of the inner Himalaya. This is also correct. So option C is the right answer here, both 1 and 2. The Tropic of Cancer passes through which of the following state? Tropic of Cancer total 8टा स्टेट देकी पास करे, टोटल 8 स्टेट्स देकी. तो से गुड़ा है राजस्थान, देन गुजरात, मध्य प्रदेश, देन योर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बेंगल एंड त्रिपुरा एंड मिजोराम. त्रिपुरार तो ये करेक्ट आंसर है मिजोराम, त्रिपुरा 2 and 3. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. त्रिपुरार उदयपुर सिटी सब नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक. एंड आउ गोटे जिन मन रखु, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 थर कट करुच्ची. गोटे एट राजस्थान जोटर से ऑरिजिनेट होती एंड नेक्स्ट टाइम इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट गुजरात. नहीं, फास्ट हूँ मध्य प्रदेश जो से ऑरिजिनेट होती, नेक्स्ट कट करे गुजरात. डू रिमेंबर दिस. माही रिवर कट्स ट्वाइस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फास्ट एट मध्य प्रदेश देन एट गुजरात. सो it correct answer तो है त्रिपुरा एंड मिजोरम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. विथ रेफरेंस टू बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It prohibits the development use of the both biological and toxic weapons. This is correct. It was the first multilateral disarmament treaty banning an entire category of weapons of mass destruction. This is correct. It was negotiated by the Conference of the Committee on Disarmament in Geneva, Switzerland. This is also correct. So option D is the 1 second. Option D is the right answer here. Next we have question number 37. Consider the following statement regarding green hydrogen. Hydrogen naturally existing as a gas in the usable quantities is called green hydrogen. This is incorrect because
हाइड्रोजेन मोस्टली यूजेबल कंडीशन रे रुहेनी दो हाइड्रोजेन क्वांटिटी सबुठ अधिका आटमोस्फियर रे किंतु हाइड्रोजेन सब कंपाउंड रे रुहे जमती H2O हिसाब रे वाटर रे थाए तो वाटर रु आमे जेतेबेले केमिकल प्रोसेस रे हाइड्रोजेन को स्प्लिट करके सेपरेट करूचे ताकू आमे कहूचे कौन ग्रीन हाइड्रोजन कहे ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय splitting water into hydrogen and oxygen using a electrolyzer produced by the renewable energy sources like your wind energy and solar energy through रे so option 1 एटी इनकरेक्ट है इंडियाज फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज इन तमिलनाडु नो एटा आंध्र प्रदेश रे अच्छी आंध्र प्रदेश कौटी अच्छी सिंहाद्री अच्छी सो ऑप्शन 2 ऑल्सो इनकरेक्ट नीदर 1 नॉट 2 सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो मास मूवमेंट तो यार करेक्ट आंसर है जो सोलिफ्लुकेशन दिस इज ए स्लो मास मूवमेंट किंतु जो तापर जो देची अर्थ फ्लो दिस इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्टी earth materials so down the low angle terrace and the hillside so this is incorrect then slump this is also uh, landslide which is relatively rapid and perceptible movement so solidification is a slow downslope flowing soil mass and fine grained rock debris saturated and lubricated with water so option A is the right answer only one next question number 39 consider the following statement with respect to the temperature distribution in the ocean the temperature decreases at a uniform rate with increasing ocean depth सरफेस टेम्परेचर सब ओशन दो हाईएस्ट थाए ये जो देखिए यूनिफॉर्म रेट विथ इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ दिस इज इनकरेक्ट यूनिफॉर्म रेट रे न थाए इट इज ऑन यूनिफॉर्मली न थाए देन टू रे द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर record relatively high temperatures than in the southern hemisphere this is correct because this variation is due to the unequal distribution of the land and water in the northern and southern hemisphere तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर सो ऑप्शन बी 2 ओनली सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 with reference to the role of the Himalayas in the shaping India's climate consider the following statement they shield the subcontinent from the cold and chilly northern winds that originate and near Arctic circle this is correct then they trap the monsoon winds forcing them to shed their moisture within the subcontinent this is also correct so option C is the right answer here so next question number 41 consider the following mountain range in India and what is the order of the above ranges from west to east direction तो ये देखिए कौन देखिए महादेव सतमाला हिल्स कैमूर हिल्स एंड रामगढ़ हिल फास्ट आसव वेस्ट रु ईस्ट देखिए वेस्ट रे फास्ट आसव कौटा आसव रामगढ़ आसव रामगढ़ पर कैमूर हिल्स आसव कैमूर हिल्स पर महादेव हिल्स आसव महादेव हिल्स देन सतमाला हिल्स तो वेस्ट टू ईस्ट सतमाला कौटी अच्छी केत नंबर सतमाला इज एन 2 देन महादेव 1 देन कैमूर 3 देन रामगढ़ 4 2 1 2 2 1 3 4 so option B is the right answer here next question number 42 consider the following statement with respect to the salinity in the ocean Arabian Sea shows higher salinity trend than the Bay of Bengal this is correct then the ocean of halocline and salinity rapidly decreases with increasing depth ना एटा reverse way the lower salinity water rest upon the higher salinity dense water salinity generally increases with depth there is a distinct zone called halocline here where the salinity increases sharply so option 280 incorrect है ये decreases लिखी
and जो देला Arabian Sea shows higher salinity trend than the Bay of Bengal. This is correct because Arabian shows higher salinity due to the high evaporation and a low influx of the fresh water. जो fresh water अधिक influx होता है तारा salinity कम. So option 1 is the correct answer. 1 only, option A. So next question number 43. Arrange the following Indian cities from east to west. रायपुर जोटा कि छत्तीसगढ़ कैपिटल. देन भोपाल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड जयपुर इन राजस्थान. ईस्ट टू वेस्ट देजी. ईस्ट हेले फास्ट आसीबो कोन रायपुर आसीबो. रायपुर गोटे सेकेंड. हाँ फास्ट आसीबो रायपुर. देन कम भोपाल आसीबो. देन मध्य प्रदेश रो भोपाल आसीबो. देन आसीबो योर लखनऊ. देन जयपुर राजस्थान. So 1 2 3 4 option D is the correct answer here. Next question number 44. Which of the following characteristics feature of the steppe type of climate? In the northern hemisphere only continental climatic type of grassland are found. Then the regions of the southern hemisphere experiences precipitation all throughout the year due to maritime influence. So option A, in the northern hemisphere only continental climate type of grassland are found. Option A is the correct answer. Option 1. Then 2 रे जो देची is the southern hemisphere experience precipitation all throughout the year due to the maritime influence. It is incorrect because southern hemisphere there is a maritime influence in the steppe type of climate. Its annual precipitation is always more than average 20 inches because of the warm ocean current that the vast the shores of the steppe lands there. Then the show it option 2 incorrect एथिपाई हेजो because the dry season is particularly pronounced in the temperate grassland adjoining the desert जोटा है ऑस्ट्रेलिया रे. So option A is the right answer here. Next question number 45. With reference to the composition of the atmosphere, consider the following statement. Oxygen becomes negligible beyond the height of 120 km from the surface of the earth. This is correct. Then carbon dioxide accounts for less than 1% of the total volume of the atmosphere. This is also correct. तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम केते एटमॉस्फेयर है 0.036%. ऑक्सीजन बिकम्स नेग्लिजिबल जो देची. Yes, this is correct. So option C is the right answer here, both 1 and 2. Next question number 46. Which of the following Indian state is also referred as a molasses basin? Molasses basin kahaku कहा जाए? मिजोरम को कहा जाए. Molasses are the thick association of the continental and marine clastic sedimentary rock and that consist mainly of the sandstone and shales formed at the shore deposits. The depositional environment involved include the beaches, lagoons and the river channels and the backwater swamps. आ मिजोरम रे मोलासेस देखा जाए ताको मोलासेस बेसिन कहा जाए and it is made up of soft unconsolidated deposits. So option C is the right answer here. Next question number, one second please. Consider the following countries: Spain, Cyprus, Jordan and Syria. Which of the following countries given above share a border with the Mediterranean Sea? तो यार करेक्ट आंसर हो 1 2 and 4. जोर्डान बॉर्डर शेयर करूनी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो मेडिटेरियन सी सहित जो कंट्री गुड़ा बॉर्डर शेयर कर स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबानन, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जेरिया, मोरक्को एसेट्रा. So next question number 48 go. In the context of astronomy, consider the following statement regarding Vigil mission. It is an initiative of European Space
agency. Yes, this is correct. Then it gives advance warning of asteroids that approach the Earth orbit. This is incorrect because it gives the advance warning of oncoming solar storms, not asteroids. So option A is the right answer here. So next question number 49. Consider the following statement with reference to semiconductor. Semiconductor माने जार conductivity more than insulator and less than a conductor. The first is it conducts more electricity than copper and aluminum. एटी इनकरेक्ट होगा बिकज कॉपर एंड एल्युमिनियम बोथ आर कंडक्टर आउ कंडक्टर टू यार कंडक्टिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर लेस थाए सो दिस इज इनकरेक्ट इट्स कंडक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज कैन बी अल्टर्ड विथ introduction of impurities through the doping process. Yes, this is correct. It is used for making commodity integrated circuit and microprocessor and memory chips. This is correct. So option 2 and 3 correct only. So option C is the right answer here. Along which of the following plate boundaries the crust is either destroyed or created? So option 1 is the convergent boundary. कन्वर्जेंट बाउंड्री से क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है मोस्टली कन्वर्जेंट कोड होता है बिटवीन ओशनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट रे बिटवीन टू ओशनिक प्लेट रे देन बिटवीन टू कंटिनेंटल प्लेट्स रे कन्वर्जेंट देखा जाए जोटी की क्रस्ट लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है देन डाइवर्जेंट ऑल्सो द डाइवर्जेंट बाउंड्री इज वेयर द न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड जो डाइवर्ज हो द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर द साइड्स वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ताको आम कहे स्प्रेडिंग साइड एंड कन्वर्जेंट प्लेस रे जोटी जो साइड रे कन्वर्ज हुए ताको आम कहे सबडक्शन जोन. So option 1 and 2 दीटा जाक करेक्ट. So option A is the right answer here. Transform boundary कहले कौन बुझिबा ए transform boundary is where the crust is neither produced nor destroyed as the plate slides horizontally past each other. Transform faults are the planes of separation generally perpendicular to the mid oceanic ridges. So ये आम क्वेश्चन नंबर 50 जाए डिस्कस करदेले. So next question आम नेक्स्ट वीडियो रे कवर करबा. थैंक यू.